Good morning, students. Today we will do exercise 8.2. So far we have done 5 questions. Now let us do. So far we have done 4 questions. So now let us do question number 5. So question number 5. So this is part 9 of the video. We were doing chapter 8 from NCERT, class 9, mathematics. And question 5 statement is, in a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. First of all, we are given a parallelogram ABCD. Let us draw a parallelogram ABCD. So this is the parallelogram ABCD, in which E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. So the midpoint of AB is E, the midpoint of CD is F. It is given. So let us write the given information first. The given is ABCD is a parallelogram in which point E and point F, these are the midpoints of sides AB and DC respectively. After this, show that the line segment AF and EC trisect line segment AF. So we have to join A to F and EC join E to C. So these two line segments trisects the diagonal BD. So we have to prove that AF and EC line segment trisects द डायगनल BD, यानी जो ये BD डायगनल है, इस डायगनल के 3 इक्वल पार्ट्स करती हैं. कौन करती हैं? एक तो AF लाइन सेगमेंट और एक EC. ये दोनों लाइन सेगमेंट इसको कहाँ पर मीट कर रही हैं? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर. तो इसके कितने पार्ट्स हुए हैं? 3. वी हैव टू प्रूव दैट ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं. ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स. लेट अस टेक दिस पॉइंट एज O, लेट अस टेक दिस पॉइंट एज E. दैट मीन्स हमें प्रूव करना है DO इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू PB. ये हमें प्रूव करना है. चलो इसको देखो कैसे प्रूव करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, E गिवन है मिड पॉइंट, F गिवन है मिड पॉइंट. तो AEFC को पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं. बेटा AE पैरेलल टू FC होगी बिकॉज AB पैरेलल टू DC है, एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम. गिवन है ना क्वेश्चन में कि ABCD एक पैरेललोग्राम है. अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AB और DC पैरेलल होंगे और उनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे. तो AB का पार्ट AE और DC का पार्ट FC, दे आर ऑल्सो पैरेलल. नाउ AE एंड FC आर ऑल्सो इक्वल. वाई दे आर इक्वल? बिकॉज AE इज हाफ ऑफ AB, क्योंकि E मिड पॉइंट गिवन था तो AE की लेंथ हाफ ऑफ AB होगी और FC की लेंथ हाफ ऑफ DC होगी बिकॉज F मिड पॉइंट था DC का. इट इज गिवन E एंड F आर द मिड पॉइंट्स. And AB equal to CD because it is a parallelogram, and in parallelogram opposite sides are equal. So AE is equal to FC and AE is parallel to FC. If one pair of opposite side is parallel and equal, we say that AECF is a parallelogram. So by definition it is a parallelogram because one pair of opposite side is parallel and equal. Now since it is a parallelogram, हमने क्या प्रूफ किया कि जो AEFC है ये एक parallelogram है. तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो इट मीन्स ये दोनों पैरेलल होंगी. तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि AF पैरेलल होगी EC के. अगर AF EC के पैरेलल है तो आप ये भी कह सकते हो कि जो EP है वो पैरेलल होगी AO के, राइट. EP एंड AO दे आर द पार्ट्स, दे आर ऑल्सो पैरेलल. नाउ क्लियरली E इज द मिड पॉइंट एंड कन्वर्स वी आर यूजिंग हेयर. सो लुक एट हेयर, इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें, AOB ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and EP is parallel to AO. तो any line drawn through the midpoint of one side parallel to other side bisects the third side. So third side is BO and it bisects by converse of midpoint theorem. So we say that implies that P is the midpoint of BO. So P is the midpoint of BO. The reason is because converse of midpoint
theorem. So converse of by converse of midpoint theorem we can definitely say this. That implies अगर P midpoint है OB का तो OP is equal to PB. Take this equation number 1. तो हमने इतना पार्ट प्रूव कर लिया. अब हम क्या करेंगे? Let us consider one more triangle. Similarly हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ये वाली, that is DPC. मैं इतना पोर्शन रब कर रहा हूँ गिवन और टू प्रूफ वाला. चलिए नाउ इन ट्रायंगल सिमिलरली इन ट्रायंगल DPC, इस ट्रायंगल में देखो जो OF है वो पैरेलल है PC के. रीजन बिकॉज आपने प्रूव किया था ये पैरेललोग्राम है. ऑब्वियसली बिकॉज AF वाज पैरेलल टू EC, ये यहाँ भी लिखा था हमने, AF पैरेलल टू EC, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे. एंड F इज द midpoint of DC. So therefore you can say O is the midpoint of DP, that is third side, and the reason is converse of midpoint theorem. Why converse? See, F is the midpoint, a line drawn through midpoint parallel to other side, so FO parallel to CP, then it bisects the third side, so O must be the midpoint, and FO bisects DP, so DO and OP they are equal. Now take this, so that implies DO and OP are equal. Take this equation number 2 from 1 and 2. In 1 we have proved OP is equal to PB, in 2 we have proved DO is equal to OP. So what we conclude from here? We conclude that all the three sides are equal, so therefore DO equals to OP equals to PB, and that is what we are required to prove and hence proved. So I hope this is clear to you. Now let us do next question. That was question number 5. Now let us do next question, question number 6. In question number 6, show that the line segment joining the midpoint of opposite sides of a quadrilateral bisect each other. Very easy question. First of all, we are given a quadrilateral. So let us draw a general quadrilateral like this. So this is the quadrilateral ABCD. Now the question states that show that means prove that the line segment joining the opposite side, the line segment joining the midpoints of opposite side. So how many opposite sides are there? There are total 2 pairs of opposite side. One pair is AB and DC. So first of all find their midpoints. Let us take their midpoints as P and R and join P and R. So this is the line segment joining the midpoint of opposite sides. Another midpoint of another pair is, say this is Q and this is S, and join this Q and S. So PR and QS are those line segments which are joined by the midpoint of opposite sides in the quadrilateral ABCD. We have to show that these two line segments bisect each other. Let they intersect at point O. We have to show that O is the point of bisection. That means we have to prove that SO and OQ are equal, this and this are equal. So we have to prove that SO equal to OQ and PO equal to OR. This thing we have to prove. And what we are given? So what we are given? We are given ABCD quadrilateral. In quadrilateral ABCD, we are given that P, Q, R, S are the midpoints of the sides respectively, A, B, B, C, C, D, D, A respectively. So how to prove this? First of all, let us do the construction, and in construction let us join P to Q, QR, RS and SP. So if you do this joining, then after this very easy proof. See, let us draw the diagonal and join AC. So this is question number 1. Exactly this is the question number 1. वैसे ही प्रूफ करोगे तो since P and Q are the midpoints of AB and BC respectively, so therefore in triangle ABC it is PQ parallel to AC and PQ is
half of AC, and the reason is by midpoint theorem. As per midpoint theorem, the line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to third side and is half of it. Now similarly, same argument for triangle ADC, and in this you have seen that S and R are the midpoints of AD and DC respectively. So SR is parallel to AC and SR is half of AC. Again the reason is same by midpoint theorem. So this is equation number 1, this is equation number 2. So from equation number 1 and 2 we conclude that PQ and SR are parallel as well as equal, and we know that if one pair of opposite side is parallel and equal, it becomes a parallelogram. So there is no problem in saying that therefore PQRS is a parallelogram, right? इतना आप फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सेम टू सेम करके आए हो. बस अब एक लाइन और ऐड करनी है. वी नो दैट इट वॉज ए थ्योरम नंबर 8.6. अगर आप रिकॉल करेंगे 8.1 से लेकर 8.10 थ्योरम्स को, 8.1 थ्योरम क्या थी? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंड आफ्टर दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. कन्वर्स थी इसका ही कन्वर्स, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, then it's a parallelogram. Third थी opposite angles are equal, then it's converse. If the opposite angles in a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. फिर था diagonal of a parallelogram bisect each other, then it's converse. If the diagonal bisect each other, then it is a parallelogram. फिर हमारे पास second definition of parallelogram थी, if one pair of opposite side is parallel and equal, it is a parallelogram. फिर 8.9 midpoint theorem, and then it's converse. तो 8.1 से लेकर अब तक हम 9 पार्ट्स कर चुके हैं वीडियो के. तो आपको स्टार्टिंग से मैंने पहले थ्योरम्स, डेफिनेशन एंड फिर एक्सरसाइज करवाई, और अभी हम 8.2 पर हैं. तो देखो बच्चों, थ्योरम का यूज़ कैसे हो रहा है. नाउ वी आर राइटिंग हियर, वी नो दैट हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा था. अगर आपको रिजल्ट भी याद है तो यहाँ पर प्रूव करने की नीड नहीं है. सो वी नो दैट 8.6 थ्योरम में हमने प्रूव किया था. वी नो दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ये हमने प्रूव किया था ना कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर. अब हमने प्रूव तो कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है, तो वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर these are the diagonals, they bisect each other. तो therefore PO is equal to OR and SO equal to OQ, and that is what we are required to prove, hence proof. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.